Hello, everyone, and if you're watching this around the holiday time, happy holidays, and if you're watching it later on in the year, well, it was the holidays when I recorded this. I'm 3 days before Christmas. I'm here doing a Chef Ranveer Brar video, Eggless Christmas Pudding with Secret Spice Mix. Now, this is actually the second video I have sat down tonight to record. The first video I stopped after about 10 minutes. I was trying to do a reaction to a different Ranveer Brar video where he had your food labs there as well, and they were doing it was like, I think they're making butter chicken was in the video title, and Chef Sanjit was cooking while Chef Brar was pointing at stuff for him to do, kind of like a YouTube type contest thing. And I thought it was going to be, I didn't know that's what it was when I started watching it, and I thought they were going to be doing like a serious cooking together. And I'm sure it's still a great video to watch, but it just doesn't make for good reactionary content. So here I am doing this, and being Christmas right around the corner makes sense. Also, I'm gonna hit 2,000 subscribers any day now. I'm at 1,980 something, 85 maybe, who knows. When I hit 2,000, I'm gonna schedule and post a live stream. I asked you guys on my community page if you wanted a live stream with me, and the answer was yes. I've done a couple impromptu live streams vertically on my phone while I've been setting stuff up. Some people hop on. It's very good conversation there, but I'm going to do a scheduled one. It won't be random. I'll let you guys know in advance. And we're also going to take 4 dishes that I've reacted to. We're going to put that on a poll on our channel when we do officially hit 2,000, and you guys are going to pick on what you finally get to watch me cook. Now, if you can always go back and watch my older YouTube videos where I do cook to see what kind of style it'll be, I guess, if you want. Anyways, let's hop into today's video. नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और मैं ये बड़ी स्ट्रांगली मानता हूँ कि वैसे आप भले ही जितनी मिठाई रसमलाई खाते हैं, 2 बार केक पुडिंग टाइप कुछ खाना चाहिए, एक अपने बर्थडे पे और दूसरा क्रिसमस पे। तो जी हैप्पी बर्थडे, मैरी क्रिसमस। आज बनाते हैं एक्समस पुडिंग, झटपट फटाफट बनने वाली। वो नहीं कि 4 दिन पहले सोक करो फिर 6 दिन छोड़ो, फिर वो चक्कर नहीं है। खट से डालेंगे, खट से बनेगा। Cake twice a year, your birthday and Christmas? Well, Christmas is the birthday of Jesus, so they're both birthdays. तो जी बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल रिच वार्मिंग। ये मेरे को मेरे बॉस्टन के वक्त की याद दिला देती है। बेस्ट पार्ट, एगलेस, अंडे का नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक आपको अंडे की आवाज भी नहीं सुनाई देगी इसमें। पीछे थोड़ा कुत्ते की आवाज आई। तो सबसे पहले दोनों काम करना ही। देखो, ये है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में है, भगवान भला करे, मैदा। ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लीजिए। बादाम को मिक्सी में पीस लीजिए और उसका पाउडर छिलके समेत पीस लीजिए। ये पता नहीं आमंड फ्लावर जो है हम बड़ा महंगा वाला ले आए हैं, कुछ नहीं करना है। बादाम लेने हैं, बादाम को थोड़ा सा फ्रिज में डालना है, ठंडे होंगे, मिक्सी में घुमा के उसका पाउडर बना लेना है, छिलके समेत वो यूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद Ground almonds are a very Christmassy type flavor when you bake. I remember when I was in culinary school, which almost 20 years ago now, ground almonds were used in a few of our Christmas baking days. ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। हम लोग इसको विंटर स्पाइस कहते हैं, पम्पकिन स्पाइस कहते हैं लोग। पम्पकिन स्पाइस लाते मिलती है ना। सबसे पहले जिंजर पाउडर गया, फिर गया सिनेमन पाउडर। Yeah, pumpkin spice here is like the unofficial start of fall when coffee chains start doing pumpkin spice lattes. My wife goes crazy for the first week of pumpkin spice lattes. I usually get some kind of pumpkin spice cold coffee beverage, and for me, once I have the first one of the year, I'm kind of over it. I don't really get any more than that. Just like we have a Christmas drink you can get here called eggnog, which is milk with egg and nutmeg in it, and you get in like a 1 liter carton at the store. A lot of people make a rum punch with it, but I've been known to see it like in the mid-November when it first hits the store. I've been known to grab a carton of it,
and just down it. Like I just get to my car from the parking lot still, and I just drink the whole carton. And but then it's done. Like I don't want it anymore again until next year. I don't even want it on Christmas Day half the time. I just wait till like it's just that one I want. Maybe it's because you can't get it year round. देखिए सर्दियों में अगर आप देखें सारे मसाले जो हैं इनकी तासीर गर्म है. नटमेग की तासीर गर्म है, क्लोव्स की तासीर गर्म है, सिनेमन की तासीर गर्म है, जिंजर पाउडर सौंठ की तासीर गर्म है. तो इन सब गर्म मसालों की तासीर की वजह से एक वार्मथ जो हम लोग बोलते हैं ना कि क्रिसमस केक में या क्रिसमस पुडिंग में एक वार्मथ होनी चाहिए, वो वार्मथ यहाँ से आती है. ठीक है जी, ये हो गया पार्ट 1. कभी भी कोई भी केक बनाएं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा अलग मिक्स करें. ठीक है जी, और वेट इंग्रेडिएंट्स अलग. तो अभी वेट इंग्रेडिएंट्स शुरू करते हैं. That's important what he said. You want to mix the dry ingredients in one bowl, you have your wet ingredients somewhere else. And the reason you want your dry ingredients thoroughly mixed is because you want, from your dry ingredients, you want them mixed very well that way if you were to take a spoonful from anywhere in them, it's all going to taste the same. You want that equality of flavor throughout it, so every bite of the finished product has the same flavor. You don't want to cut a cake up and give a piece to your friend and have it taste bad while yours tastes good, or the other way around. You want every bit to taste good. ये जो केक है ना, इसमें अपने को ओवन भी नहीं लगेगा, प्रेशर कुकर भी नहीं लगेगा, स्टीमर. और अगर स्टीमर नहीं है तो हांडी के नीचे जाली डालिए, उसके नीचे पानी डालिए, भाप बनेगी अपने आप, ऊपर ढक्कन लगा दीजिएगा. Okay, if there's one thing I've learned about Indian cooking, it's that you cook everything in a pressure cooker, and you don't need one for this cake. So let's find out what he's talking about. तो आसान, जिंदगी मुश्किल नहीं बनानी चाहिए. ये है जी टूटी फ्रूटी. बचपन में हम लोग टूटी फ्रूटी बोलते रहते थे. इसको टूटी फ्रूटी बोलते क्यों हैं? टूटे हुए फ्रूट हैं क्या इसके अंदर? टूटी फ्रूटी. ये है जी किशमिश, और ये कुछ मेरे पास ये पड़ी हुई है, भगवान भला करे. टूटी फ्रूटी, टूटी हुई फ्रूटी. नेवर थॉट ऑफ इट. आज जिंदगी में 45 साल की उम्र पहली बार सोच रहा हूँ कि इसको टूटी फ्रूटी क्यों कहते हैं. जिसको पता है नीचे कमेंट कर दीजिएगा भाई. ये है एप्रिकॉट, है तो डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए. अगर टूटी फ्रूटी भी नहीं है, मुनक्का, किशमिश, जो पड़ा है घर में वो डाल दीजिए. He said tutti frutti so many times I have the oldies song playing in the back of my head. Tutti frutti, oh, 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 अब इसके बाद अगर ऑप्शनल है, रम डालना चाहें तो डाल सकते हैं. हम ऑरेंज जूस डालेंगे. अगर आप रम भी डाल रहे हैं तो भी ठीक है ना, ऑरेंज जूस मत भूलिएगा. ऑरेंज से एक अच्छा फ्लेवर आता है. Yeah, orange is another flavor. Okay, so first, he was just talking about rum. And the ingredients that he mentioned earlier, he called them Christmas or pumpkin spice ingredients. Like he talked about the cinnamon and the nutmeg and the clove. And I had mentioned, we have eggnog, which is nutmeg. I think there might be clove and nutmeg in eggnog. Eggs and milk, and it's very Christmassy flavored. Not quite to the pumpkin flavor extreme. But anyways, like I said, we make a rum punch with it. That's tradition. He is mentioning you can put rum in this, which shares a lot of the ingredients. If you were going to make an eggnog rum punch, you might actually even garnish it and put cinnamon sticks in it as a garnish. And he's also talking about orange. Orange is another flavor that for some reason is a Christmas flavor. There's things like here we have it's a brand called Terry's Chocolate Orange. I don't like them myself, but it's exactly what it sounds like. It's a chocolate orange. It's not a real orange, but it's orange flavored chocolate shaped like an orange. I personally don't like them, but lots of people love them. They're generally sold at the holidays. रिच मतलब हैवी केक. तो ऑरेंज जूस की खटास और रिचनेस को बैलेंस करती है. उसमें डालना है जी 100 ग्राम बटर. कोको पाउडर रह गया था, कोको पाउडर भी डाल देते हैं. देखो जी बटर मेल्ट हो गया ना. पूरा ऐसे मेल्ट नहीं करना, उसे घी नहीं बनाना. गैस बंद कर दीजिए. देखिए अब ये वो रेसिपी है जो आप विंटर वेकेशन में बनाएंगे, बच्चों के घर पे छुट्टियां होंगी, है ना, तो बच्चों के साथ में बनाइएगा. और दूसरा क्या है, बहुत बड़ा पोर्शन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. ये वो टाइम गया जब आप 20-20 क्रिसमस केक बनाते थे. अब आप छोटी छोटी क्रिसमस पुडिंग बना के रख सकते हैं. तो जब बच्चों के साथ छोटे छोटे मिनी काम करने हो तो इसमें डालना चाहिए मिल्कमेड मिनी.
तो ये लीजिए, इनसे मिलिए, ये हैं नेस्ले मिल्कमेड मिनी। देखिए, जब आप बड़े पोर्शंस नहीं बनाना चाहते हैं, बच्चों के साथ छोटी छोटी रेसिपीज बनाना चाहते हैं, तब ये नेस्ले मिल्कमेड मिनी बहुत काम आता है। दूसरा क्या है ना, खोला, जितना यूज़ किया, उसके बाद बंद। If I had to go out on a limb, today's video is sponsored by Nestle Milkmaid Minis. रख दिया। बस ये लो जी। जितना यूज़ किया उतना यूज़ किया, बाकी फ्रिज में डाल दिया। है ना कूल आइडिया? तो भाई ये हो गया। अब साथ में डालो जी बटर सारा, ये बटर, ऑरेंज जूस, थोड़ा सा ऑयल। अब ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा कैरेमल कलर, या फिर आप गुड़ को पानी में घोल सकते हैं, उससे भी थोड़ा ब्लैक कलर आ जाता है, वो डाल दीजिए। अभी इसमें मिल्कमेड क्या कर रहा है? अब इसमें मिल्कमेड ये कर रहा है कि अंडे का सब्स्टिट्यूट बन रहा है। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मिल्कमेड इस पुडिंग को दे रहा है एक लचक, और लचक जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्सचर, वो बेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा नहीं चलाना है, थोड़ा सा ऑरेंज जूस और ऑयल में और डाल देता हूँ पतला करने के लिए। दूध डालते हैं लोग पतला करने के लिए, यहाँ पे दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। दूध, अंडे और शक्कर, तीनों का काम कर दिया है नेस्ले मिल्कमेड ने। सॉरी, तीनों का काम कर दिया है नेस्ले मिल्कमेड मिनी ने। So it's interesting that he's using the Nestle Milkmaid as a substitute for sugar, milk, and egg. We have here, and I'm sure you guys probably have these available in India. Box cake. You can buy them in the baking section of a grocery store, and in these boxed cake mix boxes are the dry ingredients mixed, and then you add eggs and oil and milk or water, depends on the brand, and you mix it up, and then you bake it like a cake, right? Like it's got the flour and the chocolate and stuff all in it. But when they originally came out, it was just add water and bake, when they came out 70 years ago in the 1950s or 60s. And they didn't sell as many as they thought they would, because back then I guess the marketing studies showed that the average housewife thought they were cheating too much. And the people at Betty Crocker or Duncan Hines or whoever the first one at market with these, they were a little shocked. They were like, so too easy for you, because they were putting powdered egg and stuff in them, and all you had to do was add water. So they went back to the drawing board and reinvented them with, so you still had to add your own eggs, and just the simple fact of adding your own eggs into the mix but still using the cake mix out of the box changed it psychologically in the minds of the housewives, that they were now no longer cheating, they were just making it easier. So I find it, it's kind of funny, because like he's going through a lot of effort too, by the way. Like everything he's doing, like he's doing everything else from scratch, and he is using this Milkmaid product to simulate the milk and egg in the cake. So it's like he's doing it the exact opposite, in the sense, whereas we'll get a powder and add eggs, whereas he's making all of his own dry mix. So it's kind of like the exact opposite, and it's interesting. I'm enjoying this. ओके जी, अभी कुछ नहीं करना है, थोड़ा टेस्ट करना है, पोर करना है और स्टीम करना है। अब ये जो बोल है, इस पे पहले हमने बटर लगाया, फिर ठंडा किया, फिर उस पे मैदा लगाया और उसको अच्छे से शेक कर लिया। तो बटर और मैदे की एक बहुत पतली सी लेयर बन गई, ताकि हमारी पुडिंग चिपके ना। Yeah, you want that flour and butter right on your ramekin. That way the cake will release and doesn't get stuck to it. Now, earlier he said you don't need a... Never mind. Actually, no, I'm not going to never mind. Are these going in the microwave? I know he said he's going to steam them, but is he steaming these in the microwave? Because there are
simple cake recipes. Well, they're not simple, but they're meant to be simple. That anybody can pull. Look up microwave cake, and there's recipes where you make the cake and you put it in the microwave, and like 2 minutes later, it's done being cooked. So some people love them, some people hate them. I don't know. Is this getting steamed in the microwave? एयर बबल्स निकालने के लिए. And now it's time for the magic. It's time to steam. Okay, so that's a hard no. Alright जी, अब गैस करनी है स्लो और करनी है सॉस की तैयारी. वेट नहीं करना, धड़ धड़ काम निपटा देंगे अपन. देखिए क्या है ना कि ये पुडिंग को आप बेक भी कर सकते हैं. बेक करके फिर जैम मिक्स करके कुछ लोग स्टीम करते हैं. ये मैंने शॉर्टकट प्रोसेस दिखा दिया कि आपकी पुडिंग सॉफ्ट आए, फट एक बार में बन जाए, अवन की जरूरत ना हो और आप ये ना कह पाएं कि रणवीर आपने बताया नहीं. देखिए ये हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट. और अगर आप नेस्ले मिल्क में डाल रहे हैं, कोई भी ओकेजन है, तो अच्छा बनने का 50% काम तो वैसे ही गारंटीड हो जाता है. ये देखो, ये पास से देख लो, शुगर को हमने कैरमलाइज कर लिया है. देखो, देख रहे हैं आप. और अब नेस्ले मिल्कमेड मिनी. लो जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. So I feel like this product is probably operating like condensed milk too. Condensed milk is really sweet on its own. Like if you pop open the top, and just eat it out of the can. Yes, I've eaten canned condensed milk. It's so sweet. It's kind of like pecan pie filling, like the gooey sugar butter glaze around it, like in a pecan pie. It's a weak spot of mine. I try not to keep too much. Try not to buy sweetened condensed milk if I don't have to. If I only buy it when I'm going to use it, because if it's in the cupboard, I will eat it. It's a lot of calories. It's not good. Already life में ये लो जी, टॉफी सॉस की पूरी तैयारी है, पूरी. इससे ज़्यादा मैं आपको टॉफी सॉस की तैयारी नहीं करवा सकता. रंग देखो, रोगन देखो, चमक देखो, शाइन देखो, स्मेल देखो. ये देखो, ये कैरमलाइज हो गया ना. अब इसी को बस मिक्स कर देना है अंदर. पानी का छिट्टा मार देते हैं ताकि शुगर को मेल्ट होने में थोड़ी आसानी हो जाए. ब्यूटीफुल है जी. चमक देखिए आप. बड़े वाले को थोड़ा वक्त और देना पड़ेगा. आखिर बड़ा है ना, बड़ों को वक्त लगता है. हम बुजुर्गों से पूछिए. तो भाई छोटे भाई जो है वो ठंडे हो रहे हैं, बड़े भाई को निकाल लेते हैं. Alright, let's do this. ये गार्निश बना रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको भी करना है. मेन चीज़ क्या है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, फेस्टिव टाइम में परिवार के साथ मस्ती होना बड़ा ज़रूरी है. बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ करना, वेकेशन को यूज़ करना, एक आधी रेसिपी बनाना, फिर साथ बैठ के खाना. दैट इज़ द रियल जॉय ऑफ हॉलीडेज, है कि नहीं? It's the real joy of cooking too, when you get to share it with your friends and family. Holidays or even just on a regular Tuesday. जैसे मर्जी बने, लेकिन बनाइएगा साथ में.
नाइस, लुक एट दिस टेक्सचर, टेक्सचर देखिए, हल्के से पुश इन करना है, टूटना नहीं चाहिए, शेप खराब नहीं होनी चाहिए. And you saw how easy that first one turned out. Popped out like that because the butter and flour coating on the inside of that ramekin really let it release. उसके बाद 1 2 और पूरी हिम्मत के साथ. तो जी पानी के अंदर ऑरेंज मार्मलेड के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल नाम भर का, टच भर का नमक. इसमें होल किए हैं ताकि पानी अंदर तक जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपकी क्रिसमस पुडिंग रिच भी हो गई है, मॉइस्ट भी हो गई है, फैंटास्टिक भी हो गई है. देखिए दूसरा तरीका इसको सोक करने का ये भी है कि आप इसी मोल्ड के अंदर इसको रखें. इसी मोल्ड के अंदर आपने होल किए और इसी मोल्ड के अंदर ही आपने सिरप. So using syrup to keep a cake moist, that's a real good trick. And that's like when I went to culinary school, my baking chef was from Germany. And he said, compared to a American palate, the European palate, he said, prefers cakes to be much less sweet. He said, we have way too much sugar in our food here. Our cakes are way oversweetened, in his opinion. And although his recipes were European, he said to Americanize the flavor and the sweetness, we would always cut our sponge cakes in half and simple syrup them. And part of that, you're able to add different flavors. Here's an example. My birthday was at the start of the month, and my wife asked what I wanted for a cake, and I said, I'd love a banana cream cake. And just for scheduling time and stuff, she had to make the sponge on like a Thursday when my birthday was Sunday, and she was worried about it drying out. So I said, don't worry about it drying out. We'll make a banana simple syrup and we'll brush the inside. It'll be fine. And she's like, what do you mean? And I said, well, I'll make a simple syrup, which is 1 part sugar, 2 parts water. I'll go 1 part sugar, 1 part water, 1 part banana liqueur. So she had to work. So I cut the cake into, she made 2 cakes. I made 4 layers, so I cut them each in half, and I trimmed the tops level, just like how he did with his cakes here. He trimmed the tops level, and I brushed them all down with the banana simple syrup, so it went like cake, brushed with simple syrup, banana filling, salted caramel, banana filling, cake, and like repeat layer, 4 layers of sponge, and it was delicious. It was a very tall cake, and there was banana flavor everywhere, and the sponge was super moist, and that's what he's doing here. He's poking holes in and pouring it in. It's very good, very clever. ब्यूटीफुल टू अनदर लेवल हो गया जी. देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, बाकी ज़िंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताज ही तो है. देखिए मेरे लिए क्रिसमस मतलब कैंडीड चेरी. हाँ, मैं जितनी बार मर्जी क्रिसमस केक, क्रिसमस पुडिंग कुछ भी बना लूँ, मेरे लिए जब तक उसमें कैंडीड चेरी नहीं जाती ना, मेरा बचपना जो है वो कंप्लीट नहीं होता. बचपना नहीं, बचपन, सॉरी, बचपना भी है हमारे अंदर, क्या करें. That's real nice too, showing 2 alternate plating methods. One with the smaller cake and one with the larger cake. I like how he's got two different finished products for you to show. देखिए त्यौहार कोई भी हो, उसका जो मकसद है ना, मकसद है जोड़ना, है ना. चाहे वो एक साथ मिलके गाने गाना हो, एक साथ मिलके बातें करना हो, एक साथ मिलके खाना बनाना हो, एक साथ मिलके वो गुजिया, लड्डू, वो सब कुछ बनाना हो. त्योहार कोई भी है, मकसद है जोड़ना.
So this Christmas the point is to come together and cook. और बचपन में वो याद है ना, जब त्यौहार होता था तो मिल्कमेड आता था, सब लोग साथ मिलकर लड्डू बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं. आज भी मकसद वही है, बस परिवारों को एक नया रूप मिल गया है और मिल्कमेड को भी एक नया रूप मिल गया है. बट प्लीज़ कुक विद द किड्स, cook together, because that is the real joy of cooking. Have a great festive season and Merry Christmas. Okay, I'm gonna cut it there. The recipe card was up for a second. Always a little disappointed when people don't eat their food at the end. Sometimes you can get some more information about the tasting notes. They'll tell you what it tastes like. You can add to that. I imagine that this is gonna have a warm Christmas flavor due to the spice combination in it. It doesn't look like it. There was nothing for me to pick apart or poke at. I'm starting to get a little more confident though in my knowledge of Indian food. So as I see things that I think could be improved upon, I might start voicing my opinion now. Traditionally, I just say things like, over here we do it a little differently, or my European training would tell me to do this. But I'm starting to get a little confident. Sometimes I've seen little things where I've watched, because just because I watch it doesn't mean I do a reaction. Like I've watched some other videos. I've eaten at some Indian restaurants, some takeout at least, and I can tell you that I'm starting to pick up on a few things, and I've seen some things where, well, you know what? When we get to them, we'll find them. Okay. Thanks for coming out this week. I've been Chef James, and you've been you. Thanks for watching with me.